So our today lecture is very much important because it's totally regarding to how to detect a deep fake face or deep facial recognition system. So basically our lecture belongs to previous one क्योंकि जो हमने last time भी हमने lecture किया था उसमें भी हमारे facial recognition system से ही हम इसको connect करवा के चल रहे थे. So आज भी हमारा यही काम है कि हम facial recognition system को actually face unit के अलावा किन किन चीज़ों से इसको recognize करवा सकते हैं या किस तरह इसको प्रॉपर्ली रिकग्नाइज कर सकते हैं. सो हम इसमें ये सारी चीज़ें इसको ऐड अप करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इट्स टू हम जो डीप फेक फेसेस होते हैं उसमें हम या तो सुपरवाइज लर्निंग यूज करते हैं या अनसुपरवाइज लर्निंग होती है. सो वी बोथ हैव द सेम लर्निंग मटेरियल्स एज वेल एज वी बोथ हैव समथिंग व्हिच इज टोटली सेव्ड. अब हमने करना क्या होगा? व्हाट वी आर गोइंग टू हैव कि हम इसको प्रॉपर इसकी मेकिंग करेंगे जिसमें हम अपने डेटा सेट को जनरेटिव मॉडल्स एक्चुअली बने बनाए मॉडल होते हैं और उसमें हम एक्चुअली कुछ सैंपल्स उठाते हैं. सो वी आर गोइंग टू टेक अ सैंपल ओवर अ यूट्यूब. सो यूट्यूब इज़ द बेस्ट वे टू टेक अ सैंपल. तो उसमें कुछ सैम्पलिंग हम कैसे यूट्यूब से उठाते हैं, उसकी किस तरह यूट्यूब की सैम्पलिंग की जाती है. सो देयर आर सम रूल्स टू मेक अ सैंपल्स इनटू द यूट्यूब. सो व्हाई जनरेटिव मॉडल्स में ना एक्चुअली डाइवर्सिंग के कुछ ऐसे टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं. एक्चुअली आज वी आर गोइंग टू यूज डाइवर्सिंग टेक्निक, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेजेस कलर्स डिफरेंशिएट. अभी तक हमने जो कलर डिफरेंशिएशन देखी थी वो कुछ इस तरह करके थी. नाउ हम इस तरह के फीचर्स में से कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने जा रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू मेक आवर कोड. सो वी आर गोइंग बैक ऑन गूगल कोलैब so we can make our code perfectly working. इसमें हमें अपना इसका GPU भी रिक्वायर्ड होगा बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ कोड फॉर द डाइवर्सिंग फेस. अब हमें फाइल कौन कौन सी रिक्वायर्ड होंगी? मोस्ट ऑफ द फाइल यू ऑलरेडी फेमिलियर विद लाइक IPython से हम YouTube की वीडियो का एक इंटरफेस उठाएंगे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ कि डाइवर्सिंग फेस डिटेक्शन. हम ये वाला काम करने लगे क्योंकि कल जो हमने किया था दैट इज फ्रॉम हॉग एल्गोरिथम. राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर डाइवर्सिंग फेस डिटेक्शन. सो फॉर दैट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज इंपोर्ट IPython व्हिच इज इन द कैपिटल वन. सो IPython हम इसमें इंपोर्ट करेंगे. IPython को इंपोर्ट करने के साथ साथ हम इसमें इसकी वीडियो जो है यूट्यूब वाली वो भी इसके साथ इंपोर्ट करवाएंगे. सो IPython डॉट डिस्प्ले हमें डिस्प्ले करवा दो क्या चीज़? यूट्यूब के ऊपर से कोई भी वीडियो VIDEO जिसका साइज कितना होना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू डिफाइन द साइज ऑफ द वीडियो दैट इज 59 MB के करीब करीब साइज हो. MH 59. इट्स एक्चुअली द कोड एज वेल कि हम इसके बैक एंड पे इसका कोड क्या मेंशन कर रहे हैं. एक्चुअली ये वीडियो का लिंक किस कोड से अपने आप को लेके आ रहा होता है और वो कोड किस तरह अपने आप को मैनेज कर रहा होता है. दैट इज द क्वेश्चन एंड हाउ वी गोना मेक इट हैपन. सो JQDO सो इसको रन करके देखेंगे कि ये हमारा इफेक्टिव कर रहा है या नहीं कर रहा. अदरवाइज वी आर गोइंग टू गेट अनदर वीडियो. And we got an error which is IPython की spelling तो सही. Okay, maybe I जो है इसको small में लिख के देख लेते हैं. Maybe it will affect. Again, IPython is not recognized. लेकिन ये कैसे possible हो सकता है? IPython जो है इसको recognize ना. So let's see. Pip install IPython. Maybe that's make us work with IPython in environment. If not, then we have to go with another details as well.
requirement already हमारे पास है, लेकिन still the IPython is not working. Why is not working with IPython requirement? Now that's a question for me as well. कि IPython यहाँ पे properly काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि IPython is not one of the thing कि ये काम ना करे, कि IPython तो हमें required भी है और हमें चाहिए भी। तो काम क्या कर रहा है, इससे काम क्यों खराब हो रहा है? Okay, let me have like I'm mistaken with this B maybe. So let's see. Okay, we are good to go and we have a video of YouTube. And video is still not available. Wow. Again एक और issue आया, so हम YouTube पे जाते हैं. Going to find another video. Okay, so video. हाँ, यहाँ पे इसको लिखते हैं MIT videos. या इसको ऐसे कर लेते हैं, face videos कर लेते हैं, face videos. या वैसे कोई भी वीडियो हम कर सकते थे, इट डजंट मैटर, क्योंकि फेस वीडियो की तो इसने अजीब-ओ-गरीब ही वीडियो शो कर दी है. सो एनी वीडियो, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू डिटेक्ट अ फेस, सो MIT लेक्चर कर देते हैं. सो लेट्स सी. ओके, लेकिन ये बहुत बड़ी वीडियो है, कोई छोटी वीडियो नहीं है इसको. यूट्यूब से वैसे कोई वीडियो उठा लेते हैं. It could be like कुछ सेकंड्स की कोई वीडियो या कुछ मिनट की कोई वीडियो. What's we have? What do we have? I don't have a video. That's a hard part. मैंने किया था पहले. Let's see that will help or not. लेकिन वो स्टिल वही आता है कि ये बहुत ह्यूज वीडियोस हैं, क्योंकि उसको रेंडर करते वक्त. ओके, सो ये लेकिन इसका साइड फेस आ रहा है. चलो साइड फेस डिटेक्ट हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हम कोई और चीज़ इसमें सेट करें. एग्जैक्टली, हम इसको ही चेक करके देख लेते हैं. So I'm going to pick the address of this video. So let's see, does it work or not. And I'm going to add this video and run it. And finally we have a video. Yes, finally we have a video. So मैं इसको यहाँ से delete कर दूँगा, सिर्फ बार-बार installation में चला जाता है. So finally we have our video. Now मुझे अब इस वीडियो में से अपनी चीज़ें निकालनी हैं. लाइक मुझे अब इस पे डाइबैसिंग करनी है. तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जो इंपोर्ट करवाऊँगा, that is an environment of TensorFlow version, and that is 2.x, the finest one. Now import TensorFlow. अब यहाँ पे मुझे खाली TensorFlow चाहिए as TF. Now my concern, अब मेरा जो concern start होने वाला है वो यहाँ से start होने वाला है. Import IPython. इसमें से मुझे इसके functional tool चाहिए. So I'm going to do import functional tools. मुझे mapping चाहिए. So import, I'm going to do again matplotlib dot paylot as plt. That's it. Now import numpy as np, and the most important, क्योंकि मुझे टाइम फ्रेम के ऊपर चाहिए होगा,
So I'm going to find the time frame tqdm import for tqdm. So I'm going to import the time frame as well. टाइम फ्रेम आ गया, वो बाकी सारी चीजें आ गई, मैं इसको रीड कर दूँ. सो यस, मेरी चीज रीड हो गई है. नाउ मेरा जो ऊपर डेटा सेट है, जो डेटा सेट मैंने ऊपर इंपोर्ट किया है, सो मैं उस डेटा के अंदर से अब अपनी चीजें फाइंड आउट करूंगा जो मुझे रिक्वायर्ड है, और मैं इसका जो मॉडल है, फेस मॉडल, मैं गिटहब कह रहा हूँ, ड्रॉपबॉक्स से इंपोर्ट कर दूंगा, पूरे का पूरा मॉडल ही. तो I'm going to write actually ट्रेनिंग डेटा के लिए path to underscore training underscore data. कहाँ से मुझे डेटा चाहिए, that's an important question. कहाँ से चाहिए, which is equals to, I'm going to find tf tensorflow dot keras dot utils utils dot get underscore file. अब मुझे यहाँ पे चाहिए ट्रेनिंग के कुछ फेसेस. सो आई नीड टू नो कि मैं वो ट्रेनिंग के फेसेस कहाँ से उठाऊँ. सो मैं यहाँ पे पहले इसको ऐड कर देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए. दैट इज ट्रेन अंडरस्कोर फेस रिक्वायर्ड होगा. एक्सटेंशन चाहिए मुझे फेस की. सो मुझे फेस एक्सटेंशन कहाँ से मिल सकती है. So that's an important question. So I'm going to find out the search box. Search box में मुझे जो चाहिए मुझे वो फाइंड आउट करना है. सो मुझे चाहिए ट्रेनिंग के बेसिस. तो H5 ड्रॉपबॉक्स ड्रॉपबॉक्स H5 ट्रेनिंग. लेट्स सी कि मुझे इमेज सेगमेंटेशन में ये गिटहब भी आ गई, ये विजुअल लाइव इंस्ट्रक्टर आ गया, क्योंकि हम लाइव उसके ऊपर जा रहे हैं. सो आई गेस ड्रॉप बॉक्स के अंदर ही हमें उस सारी चीज़ का जो आंसर वो जो है वो मिल जाएगा. तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ट्रेन अंडरस्कोर फेस डॉट H5. होप सो. डीप लर्निंग स्पेशलाइज्ड फेस ट्रेनिंग्स रिकग्निशन. हाँ, ये हमारे पास क्योंकि ये एक्चुअली बेस्ट इसका ट्रेनिंग मॉडल होता है, तो इस वजह से इसको फाइंड आउट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वे, क्योंकि ये कीरा का अपना बेसिक ट्रेनिंग मॉडल है. अगर हमें किसी गिटहब से भी इंपोर्ट करना पड़े तो समटाइम्स वी कैन इंपोर्ट ऑल दीज फ्रॉम. अच्छा, यहाँ पे तो ये नहीं आएगा, और यहाँ पे फाइंड आउट करके देख लेते हैं. ट्रेन अंडरस्कोर फेस डॉट H5. होप सो वी कैन गेट इट, वी नॉट. डॉट H5 से शायद ना आए, खाली ट्रेन अंडरस्कोर फेस से करके लेते हैं. एंड हमारे पास इसमें भी ये वाली फाइल. Okay, so we have a file over here. That file train face. Let's see. Okay, so ये पूरी फाइल डाउनलोड होने लग गई है. So अगर मैं इसका एड्रेस यहाँ पे यूज करता हूँ, do we get the file or not? That's an important question. Before I'm going to H5. So if I get the training file using the path as well, नहीं तो फिर मैं इसमें वही ऐड कर दूँगा इसी तरह इसको अपलोड करके. So I'm going to get the path if that path is working perfectly fine with me. So अब मैं यहाँ पे I'm going to load LOADER loader, which is equals to
lab, मेरी ये lab है, so mdl dot debussing face tft dot train training dataset load loaded path underscore to underscore training data. So let's see, run करके देखते हैं. And MLD is not defined. MLD is not defined. So before we are going to define an MLD, हम इसको define कर लेते हैं. So above here we are going to define MLD ताकि हम actually models को import कर सकें. So pip install, ये already इसका part है ना. Just import करके देखते हैं. Import MIT deep learning as MTL. तो हमें यहाँ पे फिर उसके अकॉर्डिंग इसकी, चलिए देखते हैं फिर अगर ये इंपोर्ट हो गया तो. MIT डीप लर्निंग एज MLD इसमें नहीं है, सो एक्चुअली फिर हमें इंस्टॉल भी करना पड़ेगा. ओके, सो पिप इंस्टॉल MIT डीप लर्निंग. लेट्स सी. रिक्वायरमेंट्स ऑटोमेटिकली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो फिर ये क्यों तंग करता है. ओके खैर, एनीवेज हमें जो चीज़ चाहिए थी वो तो हो गई. सो DFT यहाँ पे अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज लेट्स सी भी है. ओके DFT नहीं है तो हम यहाँ पे इसको lab2 कर देते हैं. वो lab2 इसके अंदर ऑटोमेटिकली है. सो लेट्स सी. Unable to open file signature not found. Okay, कौन सी file signature not found है? H5 है. नहीं, उसके signature इसको नहीं मिल रहा. यहाँ पे इसको इसकी signature नहीं मिल रहा है. इसकी रीजन क्या हो सकती है? Loader is equals to FLG lab2 के पास ट्रेनिंग डेटा सेट भी है, लोडर भी है, पाथ भी है. इसको वहाँ से वो चीज़ नहीं है. ओके गिटहब से अगर इसका वो नहीं आ रहा डेटा तो मैं एक्चुअली ये काम करता हूँ कि डेटा सेट को यहीं पे अपलोड करके देख लेते हैं. The only easiest way. So I'm going to upload this file to here. Then let's see what happens. Let's see how much time does it take. It's taking the time. It's taking time. इसका कोई और वे भी होना चाहिए था अपलोड फाइल का, इस मॉडल को अपलोड करने का. डीप लर्निंग AI.kit ये पड़ा हुआ हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है. इसका पाथ कहाँ से आएगा? If I'm getting the path, अगर ये वाला पाथ मिल जाए तब भी इट विल बी अ गुड चांस कि हम इसका मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं. वाई वी आर इंपोर्टिंग मॉडल, उसकी रीज़न ये है कि अनेबल टू फाइल सिग्नेचर नॉट फाउंड. रीज़न ये है कि अगर हम अपना खुद मॉडल बनाने बैठेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे. सो गेट फाइल मिसिंग वन आर्गुमेंट ओरिजिन. ये वाला मैं यहाँ से लेता हूँ सैम्पल डेटा का पाथ.
ये पढ़ा ना। Unable to open the file signature not found. Signatures. मतलब still we are having the trouble. Still we are having the trouble in the path models. ये मॉडल है लेकिन इसमें एज फाइल चाहिए हम से फाइल से भी ड्रॉपबॉक्स में ओके एक और चीज से भी इसको करके देखते हैं let I have my files I guess I have files इसके अंदर we are actually doing the lab 2 or correct okay so here the files हैं open और edit भी नहीं किया जा सकता so इस फाइल को ओपन करके देखते हैं maybe we can get the path maybe that happens sometimes that we can get the files that we were using before so it depends where is the path as we all know I have PNY on this annotation let me have train underscore face yeah yes. If that works if that works or not let's see that works or not let's see if signature मिलते हैं या नहीं मिलते and still unable to open file signature not found okay file signature कहाँ से इसमें आ रहे loader is equals to mld के पास path है dataset को load करना है still we are missing something हाँ उन्हें हर तरह के डेटा सेट के ऊपर ना एक्सेस होती है each and every access जो पर्सन्स भी किसी भी लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो हम किसी भी डेटा को किसी भी जगह से इसको पिक कर सकते हैं सो दिस इज एक्चुअली द लोडिंग लैब 2 डेटा लेकिन इसके सिग्नेचर इसके साथ मैच नहीं कर रहा इट मीन्स के डेटा की जो ट्रेनिंग सेट है उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ मिस हो चुकी है या कहीं ना कहीं स्पेलिंग कोई मिस्टेक हुई हुई है सो लेट मी हैव अ चेक कि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है क्योंकि डेटा एक्चुअली लोड हो चुका है डेटा लोड हो चुका हुआ है अगर मैं इसको यहाँ से लोडर को बंद कर दूँ ना फॉर थिंग तो डेटा मेरा लोड हो गया डेटा एक्चुअली लोडर से जब लोड होने लगता है तो वो कोई कह रहा है कि उसका जो सिग्नेचर है वो मैच नहीं कर रहे इट मीन्स कि डेटा या तो रास्ते में मैनिपुलेट हो गया हुआ है अगर डेटा मैनिपुलेट हुआ है तो फिर तो हम लोडर से तो कुछ भी एक्सपेक्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि डेटा जो है वो तो मैनिपुलेट हो गया क्योंकि इसमें हमने एक्चुअली अपने सारे फेसेस को फिल्ट्रेट करके निकालना था किसी भी वीडियो के अंदर से कि हम एक्चुअली अगर कोई वीडियो अगर हमारे पास आती है
तो हम वीडियो में से फेस को कैसे मैनिपुलेट करके निकालते हैं और फेस हमारा कैसे अपने फंक्शंस को शो करता है. सो दिस इज आवर टास्क एक्चुअली टुडे. तो उसका यही था कि इट विल वर्क प्रॉपरली, लेकिन इसमें उसका डेटा मटेरियल ही जो है वही काम नहीं कर रहा डाइबसिंग के अंदर. अगर डाइबसिंग वाला काम नहीं कर रहा होता तो इसको हम इस तरह करके देख लेते हैं कि इस डेटा सेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं. सेम फंक्शन को, डाइबसिंग को, सेम चीज़ को हम जो रिकग्निशन ऑफ नंबर है उस पर अप्लाई करके देख लेते हैं. सेम ये चीज़, अगर इस वीडियो के अंदर से कोई नंबर इसको मिलता है वो उस पर उसको रिकग्नाइज कर ले या उसको उसको ले जाए. हम इसको इस तरह करके देख लेते हैं. तो इसके लिए फिर हमें यही प्रॉब्लम आएगी ना एट द एंड कि हमें, चलें लेट्स सी करके देखते हैं कि होप्स के डाइबसिंग जो है वो हमें इस्लाम से आ जाए. सो मैं यहाँ पे फाइल्स ही अपलोड कर लेता हूँ मिस्ट की. मिस्ट विच इज इक्वल्स टू tf डॉट कीरास डेटा सेट्स ये खुद आएंगे और लिस्ट के डेटा सेट्स में से इसको इंपोर्ट करेंगे. तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे ट्रेनिंग इमेजेस, ट्रेन अंडरस्कोर इमेजेस. हाँ, सर हम कर सकते हैं. कैन वी रन इट टू सर वैलिडिटी के लिए इसको चेक किया जा सकता है क्योंकि एक्चुअली ये डेटा उससे इंपोर्ट होके आ रहा है, ये इस लिंक से डेटा आ रहा है, लेकिन लोडर के पास कुछ गड़बड़ हो रही है. हमारा लोडर जो है वो डेटा को नहीं किसी भी तरीके से फेस कर रहा था. सो पॉइंट ये है कि जब वो सिग्नेचर इसके मिसप्लेस होते हैं, सिग्नेचर इसके क्यों मिसप्लेस हो रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन. कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है इसके अंदर, डेटा सेट के अंदर जो क्रिएट की गई है. ये ट्रेनिंग का जो फेज 5 है इससे ये डेटा नहीं निकल पा रहा. तो उसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देख लेते हैं. ट्रेनिंग इमेजेस ले लेते हैं यहाँ पे एंड ट्रेन अंडरस्कोर इसके लेबल्स देख लेंगे, ये लेबल्स क्या आते हैं. एंड ऐसे चाहिए टेस्ट इमेजेस ले लूँगा, टेस्ट अंडरस्कोर इमेजेस और टेस्ट अंडरस्कोर लेबल्स. और अब यहाँ पे इसको लोड करके देखूंगा मैं यहाँ पे load load underscore data. सो मैं इसको यहाँ पे रन करके देख लेता हूँ, बल्कि इसको रन करने से पहले मैं इसके लेबल्स और बाकी सारी चीज़ें भी इसको दे दूँगा. दैट विल हेल्प अस मेक श्योर हमारा जो काम है वो प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं चल रहा. तो मैं इसको दे देता हूँ ट्रेन अंडरस्कोर इमेजेस which is equals to np dot extends, so expand dims ट्रेन अंडरस्कोर इमेजेस को पिक करो, उसके एक्सेस डिफाइन करो. एक्सेस आ जाएंगे उसके एक्सेस डिफाइन करने के लिए अभी वी डोंट हैव एनीथिंग. सो -1 एक्चुअली यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा 0 और पर पिक्सल उसको डिवाइड कर दो 255. सो 0 to 255 एज टाइप. मैंने इसके टाइप डिफाइन कर दी क्योंकि हम पॉइंट्स में बात करने लगे हैं. तो np डॉट फ्लोट float फ्लोट और फ्लोट की कैटेगरी दे दी 32. 32 तक फ्लोट हम इजीली इसके अंदर गेट कर सकते हैं. इसी तरह मैं ट्रेन की लेबल दे दूंगा. ट्रेन की लेबल्स आ गए which actually goes with train underscore labels. yes, automatically get होना शुरू हो गए. dot as type np dot int 64. अगर तो ये हमारा रीड हो गया
तो विच मीन्स कि हमारा जो डेटा है दैट इज परफेक्टली इन इमेज को पहले रीड करके देख लेते हैं. ओके MNIST मिनिस्ट इज नॉट डिफाइंड, ये कैसे हो सकता है? तो इसी का ही पार्ट है. मिस्ट एक्चुअली इसी का ही पार्ट है, तो मिस्ट जो है वो कैसे डिफाइन होगा? टेंसर फ्लो भी इसमें ऐड अप है, टेंसर फ्लो भी है, MIT भी है. इसमें एक और फाइल भी ऐड करके देख लेते हैं. लेट्स सी डज इट हेल्प और नॉट. सेट then at the end tf dot configuration config dot list underscore physical devices. इसमें मैंने इसको दे दिया GPU. ओके ये प्रॉब्लम थी इसमें, असल प्रॉब्लम नहीं है. कभी नहीं आ रहा था. अच्छा insert length नहीं आ रही इसमें. इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? इसका assert अब तो नहीं चल रहा इसमें. इसको ऐसे कमेंट कर देता हूँ. एक्चुअली कुछ फाइल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है और कुछ फाइल्स एक दूसरे पे नहीं चल रही थी. जिसका जीपीयू बंद हुआ हुआ है, जीपीयू हमें अलाउड नहीं है इसका. URLs, हमारा जीपीयू जो है वो इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ हुआ. दैट्स व्हाई ये एरर क्रिएट कर रहा है. अच्छा इसी वजह से हमारा ये भी जो सिग्नेचर है ये भी सिग्नेचर नहीं मैच कर रहा है. एक्चुअली गूगल को लैब के ऊपर ही पंगा आया हुआ है. ऑनलाइन कैगल मशीन को यूज करके देखते हैं कि कैगल पे तो नहीं इशू आता. जब तक कैगल हैव द सेम इशू देन फिर जुगाड़ लगाना पड़ेगा फिर से. So I'm going to create a new notebook. So let's have a create. Don't write anything else. I'm going to write this over the Kaggle machine. यहाँ पे हमारे पास GPU अवेलेबल होगा, हम यहाँ पे GPU को इनेबल भी कर सकते हैं. अभी जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ जाएंगी. एक्सेलेरेटर में GPU और हमने 30 घंटे के लिए GPU अपना ऑन भी कर दिया है ताकि कोई एरर हमें रिसीव ना हो. Notebook has been stopped and request if you change anything. Let's go. Session disconnected. क्यों हो गया? The notebook has been stopped by your request. If you this setting visit, please visit your reconfigure. Start your session. Okay, ठीक हो गया है और ये restart हो गया. It's connecting. Okay.
सो हमारा जो सेशन है वो रीस्टार्ट हो गया। सो मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा और इसको डालूँगा और मुझे यहाँ पे जो चीज़ इंपोर्ट करनी है सबसे ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और इन दोनों को ला देता हूँ। So I don't need these files. So let's see. TensorFlow version. Okay. यहाँ पे TensorFlow version ऐसे ही आएगा। हर एक के अपने अपने rules हैं, rules defined हैं. So let's see. यहाँ पे क्या आता है? So this will going a little bit slow due to the GPU. Bit MIT हुई है. So let's see. Okay. So we are good to go. यहाँ पे GPU होने की वजह से हम ये अपना काम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। So we don't have any ट्रबल राइट नाउ कि हमारा जीपीयू है और हमने जीपीयू इसमें से कर लिया है। सो अब यहाँ पे इसको करके देखते हैं। MNIST नेस्ट इक्वल्स टू TF डॉट कीरास डेटासेट्स डॉट MNIST नेस्ट। इसको पहले करके देख लेते हैं इसमें से इसको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वो इसको ले आते हैं। सो पहले इसकी चीज़ चाहिए होगी ट्रेन अंडरस्कोर इमेजेस आ जाएंगे यहाँ पे कॉमा ट्रेन अंडरस्कोर लेबल्स आ जाएंगे कॉमा हमें यहाँ पे चीज़ रिक्वायर्ड होगी टेस्ट अंडरस्कोर इमेजेस कॉमा टेस्ट अंडरस्कोर लेबल्स। तो इसको रन करके देख लेते हैं अगेन। ओके ट्रेन अंडरस्कोर इमेजेस नॉट डिफाइंड ट्रेन अंडरस्कोर इमेजेस इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं खाली लिस्ट पर करके देखता हूँ बाद में इनको ऐड करता हूँ। ओके वी आर गुड टू गो। मिस्ट इसमें ऐड है क्योंकि जीपीयू की वजह से मिस्ट ऐड होता है। सो अब हम यहाँ पे ट्रेनिंग डेटास को ऐड अप करने वाले हैं। नाउ I'm going to add train images. So train underscore images which is equals to np dot span underscore dim और अच्छा ये वैसे वहाँ पे सिंटेक्स लिखा ही हुआ है इसको यहीं पे कॉपी कर लेते हैं। So we don't need to write the whole syntax. हमने 64 तक ले दिया इसको। इसके लेबल्स ऐड अप हो गए टेक्स्ट लेबल्स आ गए। And we are good to go. सी हमें जीपीयू की मशीन की वजह से सम टाइम हेल्प भी होती है और सम टाइम हम ये भी काम इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों मशीन के होने का फ़ायदा ये है कि हमारे पास कुछ भी हो जाए सो वी ऑलवेज हैव द ऑल्टरनेटिव वे टू डू और वर्क। जैसे हमारे पास पहले कोलैब होती है सम टाइम कोलैब पे आपका कोई काम नहीं चल रहा होता सो वी कैन वर्क यूजिंग द कैगल मशीन। सो कैगल मशीन पे आपका काम चल रहा होता है तो कैगल पे जब आपका काम नहीं चलेगा तो फिर हम किसी और मशीन को देख लेंगे। सो वी हैव मशीन्स ऑलरेडी। तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा प्लॉट जो किसका है फिगर का वो लेके आओ FIG वाली फिगर का प्लॉट लेके आओ। यहाँ पे फिगर का साइज मेंशन कर देता हूँ। साइज इज 10 by 10 का साइज। RANDOM रैंडम स्टेट रैंडम एंट्रीज करो उसमें इस तरह R.DOM random .choic choices choice। अब आपकी प्लॉटिंग की जो ग्राफिकल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। प्लॉटिंग की ग्राफिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए या क्या आनी चाहिए दैट इज our concern right now। For right now we have a concern how we gonna get the box। So I'm going to write 3000 comma
और इसको कर लेते हैं और ज़्यादा थोड़ा 30,000 कर लेते हैं, कॉमा 36। सो तो रैंडम स्टेट इसमें से वो फाइंड आउट करेगा। सो मैं लूप अपना चलाऊंगा और आई इन रेंज ऑफ 36 तक मेरा लूप चलेगा। वो लूप मेरा करेगा क्या, वो प्लॉट करेगा सब प्लॉट्स को, जैसे हमने लास्ट टाइम कल किया था। सब प्लॉट को प्लॉट किया, उसमें 6 by 6 के छोटे छोटे प्लॉट्स निकाले जो कि ऐड अप होते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ i+1 लूप के। प्लॉट किया हर स्ट्रिक्स को, STRIC के स्ट्रिक, और एम्प्टी अरे छोड़ने लगे हैं। एम्प्टी अरे का फायदा ये कि अभी हमें नहीं पता कि हाउ मच वी गोना हैव टू डील विद। सो x strict plt dot y strict STRIC stricts, and again we don't have any idea about the stricts। अब मेरी ग्रिड बनेगी प्लॉट की, मैं ग्रिड बनाऊंगा GRID ग्रिड। ग्रिड नो आइडिया, फॉल्स, कि कितने सेंटीमीटर या इंचेस की होनी चाहिए। Now I'm going to define the hidden layers in my image. तो image underscore ind, which is equals to random underscore inds। कहाँ तक बनेगी मेरी hidden layers, वो आय तक जाएंगी, जितनी आय होगा उतनी मेरी hidden layers बनती जाएंगी। So plt प्लॉट कर दो im show को np डॉट सीक्वेंस वाइज, हम सीक्वेंस वाइज हमें चाहिए, सीक्वेंस वाइज भी चाहिए, और उसके दरमियान की जो स्पेस है वो स्क्वीज कर देते हैं, SQU स्क्वीज हो जाए उसका दरमियान की स्पेस। मैंने किया ट्रेन अंडरस्कोर इमेजेस को ट्रेन किया, मेरे सारे इमेजेस ट्रेन हो जाएंगे, और मुझे यहाँ पे और साथ की क्या चीज़ चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अरे, इमेज अंडरस्कोर ind हिडन लेयर्स, हिडन लेयर्स के साथ साथ मुझे मैपिंग चाहिए। अब मैप C map, I'm going to find the C map which is equals to plt dot cm dot binary map। So I need a binary map as well। So मेरा binary map आ जाएगा। अब binary map के साथ साथ I need a label of a map। So plt dot x label, ट्रेन करना पड़ेगा मुझे लेबल को, अंडरस्कोर लेबल्स मेरे ट्रेन होंगे। So image underscore ind। So this is how we're gonna label and plot our values। So let's see, and x ठीक है, रन होगा TICK PLT X label, ये कहाँ गया PLT X, PLT dot X label, ये डिफाइन तो किया हुआ है X label, a plot X LABL लेबल तो है, इसके प्लॉट ही होता है प्लॉट का, ये क्यों नहीं इसमें आ रहा। प्लॉट PLT सही है, ये भी सही है, कोई ना कोई चीज कटती है। लेबल में ट्रेन लेबल इमेज, PLT dot X label train underscore labels image and has no attribute of X label। अब ये नया, अब ये उधर रीड होता होगा, ये इसमें रीड नहीं होता होगा।
ओके, अब पंगा हमारे साथ ये है कि लेबल उसका आ नहीं रहा, नहीं तो इनके नीचे इसके लेबल भी शो हो जाने चाहिए थे कि ये कौन कौन से लेबल से क्या क्या चीज़ें इसमें से गेट हो रही हैं। एक्चुअली हमारा काम ही इन लेबल्स को गेट करना था, तो नॉट अ गुड थिंग। एक चीज़ कहाँ पे कंपाइल होती है और एक चीज़ कहाँ पे कंपाइल होती है, दैट्स नॉट अ गुड वन। क्योंकि इसने मैप की सूरत में मैप को क्या आना था कि आपके हर प्लॉट का जो मैपिंग है वो क्या है और कैसे होती है, और प्रोबेबिलिटी आपके हर उसकी क्या आती है। तो अगर वो नहीं चला तो बात नहीं, हम अपना प्लॉट लिख लेते हैं, हम प्लॉट बना लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू मेक आवर ऑन प्लॉट। सो आई एम गोइंग टू यूज define build underscore fc underscore build, सॉरी मॉडल, मॉडल बिल्ड कर लेता हूँ। अब ये मॉडल एक्चुअली बिल्ड क्या हो रहा है, मैं अब यहाँ पे हूँ। जी बिल्कुल, अब कैगल मशीन जो है वो लेबल एक्स लेबल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक्स लेबल पता नहीं उसमें पार्ट होगा या उसका पार्ट होगा, क्योंकि एक्स लेबल का मकसद ये था कि जो 7314 आ रहा है इमेज के नीचे इसकी ट्रेनिंग लेवल भी आ जाता है कि ये क्या शो हो रहा है। सो बस कोई आगे जाके गड़बड़ ना क्रिएट कर दे। फिलहाल तो हम इसको भी यूज़ नहीं करने वाले, हम अपने बिल्ड मॉडल को बना के देखते हैं कि अगर बिल्ड मॉडल हमारा चल जाता है तो फिर हमें उसको यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एफ सी अंडरस्कोर मॉडल इज इक्वल्स टू, मैं इधर से ही हेल्प ले लेता हूँ, कीरास डॉट एस ई क्यू यू ई सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में मुझे चीज़ें ऐड करनी है। पहली, ये सारा कुछ मेरा सीक्वेंशियल में ऐड होने वाला है। तो पहले मुझे यहाँ से क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए लेयर्स, हिडन लेयर्स। कीरास के पास क्या लेयर्स चाहिए मुझे, फ्लैटेंड FLEDERN फ्लैटेंड लेयर्स चाहिए मुझे सारी। नेक्स्ट, कीरास में से व्हाट आई नीड, टेंस लेयर्स। ये सारी अपनी टेंस लेयर चाहिए। टेंस लेयर के लिए मैं अपने कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करूंगा विद एक्टिवेशन फंक्शन। 128 का एट्रीब्यूट होना चाहिए और एक्टिवेशन के लिए मेरा TF डॉट नैनो नैनोमीटर्स, मैं इसको NN कह दिया, और इसमें मैं अपना रीलू जो मैंने एक दफ़ा आपको क्लास में बताया था द एक्टिवेशन फंक्शन है, मैं वो यहाँ पे इसकी यूटिलाइज करूँगा। रीलू रीलू फंक्शन समटाइम्स इफेक्टिव होता है, समटाइम्स नहीं होता। सो जब इफेक्टिव है तो ठीक है, जब इफेक्टिव नहीं है, अगर रीलू काम नहीं करता, सपोज करते हैं रीलू इज नॉट वर्किंग, तो हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, कीरास डॉट लेयर्स डॉट टेंस। यहाँ पे रीलू की जगह आई एम गोइंग टू यूज सॉफ्टमैक्स। एक्टिवेशन इज इक्वल्स टू TF, ठीक है, ओके TF मिस्टेक आई हैव डन एक्चुअली, मैं उस मिस्टेक को सही करता हूँ। रीलू, oh sorry, softmax. So this is what we are going to do, and जो मैंने mistake की है, so if you don't find that mistake, so that is TF not TK, and that's it, done। FC underscore model or model is equals to build underscore FC underscore model,
So let's see, does it work or not? And it's working. Yes, our model is working. Yes. हमें ऊपर वाले लेबल मॉडल की अब जरूरत नहीं है. So we have our on model and it's working. अब इस मॉडल को कंपाइल करवा के देखते हैं. Model dot compile optimizer ef dot eras dot optimizer. अब यहाँ पे SGD जो इसका बाय डिफॉल्ट लर्निंग का एक मॉडल है, लर्निंग रेट में डिफाइन कर दूंगा. दैट इज एरर 1 E-1. That is error. As you know, E belongs to an error. And loss, if we're gonna have, तो मैसेज प्रिंट करवा देते हैं. SPKRS space underscore categorical error or categorical cross orthography. या स्पेस ऐड को कर देते हैं. स्पेस कैटेगोरिकल लॉस में आ गया. एंड the most important thing is matrices accuracy में आ जाएंगे. METRICS matrices equals to, it's going to be in ACCURAC accuracy. Let's see. And our model is working as well. And model हमारा compile हो चुका है दोनों चीजों में. With the help of GPU, yes, we can use a lot of things. Now हमने अपना मॉडल खुद से ट्रेन करना है. Because we don't have any model X लेवल में नहीं है, तो मैं दूंगा बैच BATCH बैचेस बनाऊंगा. बैच साइज मैंने पहले दे दिया. पहला बैच साइज 64 का. और उसके कितनी दफ़ा इटरेशन चल रही है. EPOCHS पॉचेस इसको दे दिया 5 दफ़ा लूप चले अभी स्टार्टिंग का. So model dot fitness of the function is on train underscore images is पे निकले, train underscore labels पे निकले, batch underscore size which is equals to batch underscore size इसके थ्रू आए. और मेरे पास EPOCHS which is equals to EPOCHS which is. So this is how we're gonna train our a little model. Okay, इसमें error क्या है. use multiprocessing. अच्छा हमने multiprocessing यूज किया. तेरी खैर इसका loss function में इतनी multiprocessing यूज हो रही है. Unable unknown loss function spare category. ओह अच्छा मैं loss function पूरा define कर देता हूँ. तुम गुस्सा खाता भाई. So we are going to define the loss function, complete one. CAT EGOR ICL categorical underscore cross stentography run. Okay, and run again. अब क्या है मेरा. Error while checking the model target, expected no data but the array logged.
How is that possible that अच्छा unable unknown loss where categorical जिसकी spelling गलत हो गई होगी मेरी इसी वजह से ये error आया CROSS इसमें तो कोई error नहीं है इसको update कर देते हैं ओके ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई ओके वहाँ तो 30,000 सैंपल दिए थे 60,000 कहाँ से ओके एनीवेज so right now we have an accuracy of 97% we have an accuracy of our algorithm for the facial detection category अब मैंने अपना फेस फंक्शन दे दिए उसको उसका बैच दे दिया कि मेरा जो उधर बैच बना था मॉडल का जिसमें हमने नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना था तो हमारा मॉडल जो है वो 97% एक्यूरेसी के साथ नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है अब हमने अब बिल्डअप मॉडल्स के पास जाना है बिल्डअप मॉडल्स एक्चुअली ये होते हैं नाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट हमारा टेस्ट स्कोर क्या था हमारे बाकी सारे स्कोर क्या थे डेटा सेट में से हमारे बाकी सारे स्कोर्स क्या निकलते हैं टोटल डेटा सेट में से हमारा स्कोर क्या आ रहा होता है तो हमारा वो काम तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि पहले हमारा फंक्शन चला नहीं सो वी हैव मेड और ऑन फंक्शंस सो टेस्ट लॉस कॉमा टेस्ट accuracy which is equals to model dot evaluate evaluate test underscore images test underscore labels और print करनी है टेस्ट की accuracy कितनी थी I'm going to print the test accuracy so print test ACCURACY test accuracy test underscore ACC okay so we are close हमारा टेस्ट भी जो हमने अपना मॉडल बनाया है टेस्ट भी हमारा बिल्कुल क्लोज है उसके हम इस एक्यूरेसी पे हैं सो हमारा जो टेस्ट है टेस्टिंग है वो इस एक्यूरेसी पे है ओह that's a good part in the recognition system that's a good one we are more accurate अपना मॉडल लिखने से ये फायदा होता है जैसे हम मॉडल हमारा इंपोर्ट नहीं हो रहा था सो उसने लेबल्स इंपोर्ट नहीं किया सो वी राइट और ऑन मॉडल हमने अपना मॉडल इंपोर्ट अपना मॉडल लिखा तो अपना मॉडल लिखने से ये फायदा होता है कि वी कैन इंक्रीज द एक्यूरेसी अब इस एक्यूरेसी को चैलेंज करते हैं और चैलेंज करने के साथ साथ वी आर गोइंग टू पुट दिस एक्यूरेसी ऑन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्योंकि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के साथ ही समटाइम आ रहा होता है देन हम इस लेक्चर को फिर आगे लेके चलेंगे सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सो फाइंड build underscore CNN convolutional underscore model. Now, the most important part of this model is how we're gonna write it in a correct way. अब हमने इसको कंपेयर करना है अपने मॉडल के साथ so let's see कि हमारा मॉडल और इस मॉडल में कितना डिफरेंस आता है so I'm going to make CNN underscore model which is equals to tf dot
keras dot sequential अरे sequential array अब हमने कितनी देनी है, जैसे हमने ऊपर मॉडल बनाया था इस टाइम यहाँ पे sequential array की बनाएंगे। सो पहले tf keras 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 dot layers dot convo 2d। now convo 2d 2d लेयर पहली आएगी और इसके फिल्टर डिफाइन करेंगे, फिल्टर which is equals to 24। पहली लेयर्स होंगी पहले फिल्टर के पास, कर्नल के पास 3x3 का साइज होगा, 3x3 का साइज काफी है कर्नल के पास। और एक्टिवेशन, पहला एक्टिवेशन हम दे देंगे उसके पास रीलू के पास ही। सो tf dot nn dot relu कॉमा दूसरी लेयर डिजाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे मैक्स पुलिंग की। जैसे कॉन्वोल्यूशनल पूरा बनता है, जैसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कंप्लीट डिजाइन किया जाता है, ये वाला नंबर डिजिट से हम आ गया है कॉन्वोल्यूशनल जहाँ पे डिजाइन होता है। एक्चुअली दिस इज अ पार्ट, दिस इज अ पार्ट, ये वाला पार्ट है जिसमें हम पूरा नेटवर्क अब डिजाइन कर रहे हैं कॉन्वोल्यूशनल का। सो मैक्स पुलिंग आएगी tf डॉट keras डॉट layers डॉट मैक्स पूल आएगा 2d का, पूल साइज आएगा यहाँ पे, पूल साइज मैं दे दूंगा 2x2 का। सबसे छोटा साइज यहाँ पे देने का फायदा ये होता है कि आपको एरर आने के चांस सबसे कम होता है। अगेन मैं कॉन्वोल्यूशनल की लेयर बनाऊंगा, लेकिन दिस टाइम आई एम गोइंग टू डिफाइन अ कर्नल इन अ वेरी और सिर्फ मैं यहाँ पे अपना एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो चेंज कर दूंगा, या वो भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसको चेंज कर देते हैं 36। 3x3 के बॉक्स के अंदर ही इसको तोड़ते हैं और 36 पे इसको जाने देते हैं। अगेन मैक्स पुलिंग की लेयर आएगी, सेम लेयर, इसमें किसी भी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब फ्लैटेंड लेयर हमने ऐड कर दिया, सो tf डॉट keras dot layers dot flattened। now this is our part, this is our major part। now यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ हिडन लेयर्स keras को ऐड कर देंगे, keras dot layers dot dense। टोटल कितनी लेयर्स होनी चाहिए, 128। now this is our part, यहाँ पे हम keras को टोटल नंबर ऑफ लेयर्स है वो ऐड करके दे रहे हैं। तो कीरा को टोटल नंबर ऑफ लेयर्स है कितनी रिक्वायर्ड होनी है और कितनी रिक्वायर्ड इसको चाहिए, या कितनी हमें रिक्वायर्ड होनी है इसको फाइंड आउट करना है। तो मैंने टोटल लेयर्स दे दी 28 और इस पे भी इसका एक्टिवेशन फंक्शन जो है ये रखता हूँ, क्योंकि मैंने डेंस लेयर बना दी। पहले मैं सिंपल लेयर्स बना रहा था, नाउ मेरा activation is equals to tf dot nn dot now अब मैंने अपनी लेयर्स को डिक्रीज करना है, so tf dot keras dot layers dot
इंसिडेंस मैं 10 लेयर करूँगा और यहाँ पे साथ ही एक्टिवेशन फंक्शन को भी थोड़ा सा चेंज करूँगा. Activation is equals to ef dot nn dot softwares. So मैंने अपने यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन को भी चेंज किया और मैंने अपनी कहानी एंड की फॉर फंक्शंस रिटर्न कर दिया cnn underscore model को cnn underscore model is equals to build underscore cnn underscore model. So cnn dot cnn underscore model dot predict कहाँ पे प्रेडिक्ट करवाएंगे ट्रेन अंडरस्कोर इमेजेस के ऊपर जो 0 अरे से स्टार्ट होगा और इसकी समरी प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट cnn underscore model dot su summary. That's it. Okay. Yeah. Position argument follows by the argument 24 kernel ये तो सही है kernel size 24 filter kernel size 24 ये तो सही है इसमें क्या पता आ गया filter as a variable उठा रहा है सही है इसका क्या space is creating a problem यहाँ पे भी दो spaces हैं ओके यस इसमें स्पेस जो है वो एरर क्रिएट करती है जैसे अभी क्रिएट किया था positional argument follows keyword up yes, yeah. रोज को लिखने का तो यही तरीका होता है ये क्या पड़ा ये रही है files. Now again we are in some kind of achievable formation IPython input filter 24 नहीं हमने कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं दिया कोई ऐसी चीज यहाँ पे ऐड नहीं की है टोटल में कि सारे तो इसके अपने फाइल्स ही हैं और अच्छा इसको क्या हो सकता है
इस एरर का ये है, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। मतलब इसके यहाँ पे जो पोजिशनल आर्गुमेंट मैंने दिया 24 लेयर्स का, इसके बाद एक कीवर्ड आना चाहिए। एक्चुअली इसको कीवर्ड दिया है कर्नल अंडरस्कोर साइज का कीवर्ड। कहते नहीं, इसके बाद एक और कीवर्ड आना चाहिए कि ये पता लगना चाहिए कि ये फंक्शनल आर्गुमेंट जो है ये जा किधर रहा है, मतलब ये सेंड किधर हो रहा है। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट डज इट मीन कि ये कहाँ सेंड होगा और क्यों सेंड होगा। लेकिन ये कोई वे तो नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अपनी 2D कन्वोल्यूशनल लेयर्स बनाई है तो ये ऐसे ही शो होता है। अच्छा, इसको क्या चीज़ कैसे आनी चाहिए। maybe यहाँ से इसकी कोई हेल्प नहीं है, इसको ऐड कैसे करते हैं इसको। Sure. I have to say KFI. Come up over here. Get to the point. That's the point. There's our convertory filters, kernel size. कोई एरर है जिसका लॉजिकल वे कुछ नहीं बन रहा। सबसे बार है लॉजिकल वे के बगैर कैसे आएगा। नहीं नहीं, अगर वो भी दे देते हैं, अगर आप जो कह रही हैं वो भी मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे तो ये भी डिफाइन कर देता हूँ कि 8 6 3 क्या बनता है। अगेन वो इस कॉमा के ऊपर कर रहा है बात, इस कॉमा पे बात कर रहा है। मैं इस कॉमा को हटा दूँ, सपोज कर्नल साइज पे आ जाएगा। पॉइंट इसके अभी आपके सामने किया तो है, वो उसको नहीं उठा रहा, सब नहीं करता। देखना, मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 8,3। सी, जैसे यहाँ पे उसको वो मिल गया, इसने अपने आप को फॉलो सेम कीवर्ड आर्गुमेंट कर दिया। तो कोई और, अब ये वाला फंक्शन ये ना पंगा होता है कि यहाँ पे CNN जो है ये अपना मॉडल नहीं चलाने दे रहा। कंपाइलर रिस्ट्रिक्शन।
पंगा ही लेने हैं ना सारा ने, तो किसी भी तरीके से ले सकता है कंपाइलर। अच्छा फिर क्योंकि वो लेयर्स ही डिफाइन नहीं करा तो कहानी हो गई, इतनी लेयर्स ही नहीं डिफाइन करने दे रहा। That's the only part कि we don't have any choice और आंसर के इसको कैसे ठीक किया जाए। How are we gonna make this correct? तो इसको क्रैक करने के लिए हमें आंसर वगैरह रिक्वायर्ड होंगे और इस आंसर्स को हमने हर चीज़ को कंप्लीट करना है। हाँ फिल्टर्स अरेज करके भी अगर हम वैल्यूज को भी ऐड करते हैं खाली, लेकिन फिल्टर्स अगर अरेज कर दिया वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट। फिल्टर्स तो अरेज नहीं किए जा सकते किसी भी सूरत में। अगर मैं खाली यहाँ पे 24 भी देता हूँ लेयर को डिफाइन करने के लिए, सो अगेन हाँ अब अगली लेयर में ट्रेवल हो गया। लेट्स सी। ना पूरा मॉडल ही उसने उड़ा दिया। वो कह रहा है इसमें सिक्वेंशियल ही नहीं है। इसको स्पेलिंग तो नहीं गलत है। SEQUENT, यस इस वजह से मॉडल्स नहीं आ रहे थे। TIAL कर्नल साइज डिफाइन नहीं होगा। Let's see, क्या है इनपुट 0 sequential unexpected full wrap। अच्छा इस बार इसमें ब्रैकेट का भी डिफरेंस आ रहा है, खैर एनीवेज वो तो एक अलग चीज़ है। Input 0 clear the sequential well with update with the layer expected। अच्छा तो जब भी हमने कंपैरिजन मॉडल लिखना है तो कोई ना कोई गड़बड़ हमने क्रिएट करनी है। Table size में one argument miss है। ये वाला काम तो सही हो गया, अब कर्नल में से क्या मिस है।
दैट्स व्हाई जो कोडिंग पार्ट होता है हमेशा कोई ना कोई छोटी सी मिस्टेक पे डे बैठता है। सो हमारे CNN मॉडल के साथ क्या पंगा चल रहा है? क्या कर्नल के स्पेलिंग वही रहेंगे? फिल्टर या इसको फिल्टर या फिल्टर्स कर सकते हैं। ये सिंटैक्स का पार्ट है। दीज आर द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। अभी कर्नल के स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से तो एक एरर जनरेट हुआ था। अब इनपुट लेयर 0 वाली साइड पे इंडेक्स एरर आ रहा है। इंडेक्स 0 है ये वाला। स्टिल वैल्यू एरर। Input 0 of layer mention 3 is incompatible with accepted full space received. No, this is hard one. इसमें एक्चुअली कोड चल रहा है लेकिन इनपुट जो है वो उसको असाइन नहीं हो रही डेंस लेयर को। And there is no other way to assign the dense layer to the input. और हम अपनी इस मॉडल एक्यूरेसी को प्रेडिक्ट भी तभी कर सकते हैं जब हमारी दोनों डेंस लेयर जो है एक्यूरेटली काम कर रही है। तो वो डेंस लेयर उसकी काम किस तरह से नहीं करती। रिकंस्ट्रक्शन लॉस समझ आ रही है क्या नहीं समझ रही। हम एक्चुअली इस पे काम कर रहे हैं और मैंने क्या मैंने कोई चीज़ मिस किया है। मैक्स पुडिंग कन्फर्मेशनल करने में ये इमेज के लिए है।
ये जो आपने सेंड किया ना, ये वो पार्ट है जो इस फंक्शन में, हमारे फंक्शन में डिफरेंस टेक्निकली कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम अपने इस पार्ट पोर्शन को देखें ना फंक्शन के, इसमें हमने रिकग्नाइज क्या करना है, इसको इनमें से एक डिजिट को जो भी हम आगे जाके रिकग्नाइज करना चाहेंगे। 2D लेयर के जो फिल्टर है उसमें हमने कोई इनपुट शेप नहीं दिया, पहली बात, क्योंकि हमें इनपुट शेप चाहिए नहीं। जो आपने सेंड किया उसमें इनपुट शेप है, वो डिफरेंट होती है। इनपुट शेप का मतलब है कि हम हर लेयर पे दोबारा उसको इनपुट देके दोबारा चेक करवा रहे हैं। अगर आपका पार्ट देखा जाए तो आपके पोर्शन में इनपुट लेयर पहले के साथ ही दोबारा रीसेंड कर दी जाती है, हमारे इसमें कोई इनपुट लेयर नहीं। एक्चुअल जो हमारा जो डेटा में जो एरर क्रिएट हुआ है वो ये एरर क्रिएट हुआ है, इनपुट जीरो ऑफ लेयर सीक्वेंस सिक्वेंशियल पार्ट थ्री। तीसरी दफा चलने के बाद भी वो उन इनकम्पैटिबल है विद द लेयर एक्सपेक्टेड, सारी लेयर्स के साथ इनकम्पैटिबल है। मतलब कहने का जो हमारा एल्गो बना है वो इनकम्पैटिबिलिटी में आ रहा है। इनकम्पैटिबिलिटी में एल्गो आपका तब जाता है जब आप से कोई चीज़ मिसप्लेस हुई हो, या आपने कोई ऐसी टेक्निक देखी हो जो आगे सिर्फ आपको ही पता, बाकी किसी को उस टेक्निक का नहीं पता। मतलब कहने का सीधा सीधा कि आपने खुद वो टेक्निक को ईजाद किया, तो ये काम हो सकता है। आई विल सी कि मैं इसको आगे फर्दर इसको कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ या सॉल्व कर सकता हूँ। आई विल फाइंड द वे एंड गेट बैक टू यू कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। टिल देन मैं आपको ये लेक्चर और इसका कोड और ये जो स्लाइड इसकी सेंड करता हूँ, एंड देयर इज एन असाइनमेंट एंड टास्क फॉर यू एज वेल। और वही टास्क ये होगी कि आपने एक सेम नेटवर्क बनाना होगा और आपने टू को रिकग्नाइज करवाना होगा, जस्ट नंबर टू। आप नंबर टू को जो है उसमें से रिकग्नाइज करवाएंगे कि नंबर टू को आप कैसे रिकग्नाइज करवाते हो। मीनवाइल आई एम गोइंग टू मेक टू थिंग्स, एक टाइपिंग के कैगल पे कोलैब पे क्या मुसीबत आई है कि ये नहीं चल रहा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कैगल पे ये मॉडल नहीं उठा रहा होगा। तो बोथ थिंग्स कैन बी हैपन। तो तक मैं ये एरर भी इसको सॉल्व करता हूँ, आई विल गिव बैक टू योर आंसर के नंबर्स का डेटा। ये तो हमने खुद लेयर्स बनाई है ना एक्चुअली। देखिए अगर आपके पास जो हिडन लेयर्स है ना, ये आप खुद क्रिएट करते हो। अगर आपने हिडन लेयर्स कम करवानी है आप हिडन लेयर्स कम कर दो, आपने हिडन लेयर्स ज़्यादा करनी है आप हिडन लेयर्स ज़्यादा कर दो। सो इट्स अप टू यू। यहाँ पे मैंने अपने लेयर्स को क्रिएट किया था। So it's up to you how many layers do you want to add, how many layers do you want to out, कितनी layers आपने ऐड करनी है, कितनी layers आपने ऐड नहीं करनी, it's totally up to you कि आपको कौन कौन सी layers चाहिए, कौन कौन सी layers नहीं चाहिए। तो that's totally belongs to you. So 1 to 9 डिजिट्स का डेटा लेयर से आया। आयशा एक्चुअली पता है क्या होता है, हम ये लेयर्स डिफाइन कर रहे हैं ना, इट डजंट मीन कि आपकी लेयर्स हैं वो कुछ इस तरह चले। ये एक्चुअली लेयर्स पेयर बनी होती है। अगर आई शो यू, ये लेयर्स इस पेयर की फॉर्मेशन में आ रहा होता है, padding, kernel, max pooling. Actually, is in the form of layers of pair layers. हाँ उसको तो आप इसकी कह रहे हैं ना, वो तो हमने यहाँ पे ये लगाया था ना लुक, और 30,000 वर्ड में से हमने इसको फाइंड आउट किया था। आप इसको 60,000 कर दो, लेबल आ जाता तो ज़्यादा बेहतर था।
ये हमने खुद अपनी मर्जी से डिफाइन किया कितने हमें चाहिए, कितने नहीं चाहिए। इसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। लाइक मैंने 6x6 का बनाया था, मैं इसको 10x10 का कर देता हूँ। 10x10 का फिगर साइज भी 10x10 ही है, और चलो सब प्लॉट साइज भी 10x10 का कर देते हैं। सो सी यू कैन हैव इट एनी टाइम, यो आप इसको जिस मर्जी तरह इसको कर लो। मैं आप इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको 9x10 का कर देता हूँ। तो इसमें डिजिट्स आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। दिस इज अ लूप। लूप आपने ज़्यादा तेज चलाना है, ज़्यादा टाइम के लिए चलाना है, इसको 46 कर दो, इधर से भी 46 कर दो। अगर आपने इसको और ज़्यादा देना है तो इसको ऐसे कर दो। पिक का साइज ज़्यादा करना है तो 20x20 का कर दो। आयशा हमने ट्रेन करवा लिया डेटा, हमारा डेटा जो है वो ट्रेन हो चुका हुआ है। हमने इस मॉडल में अपने डेटा को ट्रेन करवा लिया हुआ है। सी द ट्रेनिंग इमेजेस, हमारा डेटा ट्रेन होके हमें एक्यूरेसी मिल चुकी है अपने डेटा की, कि हमारा जो मॉडल है ये वाला, वो कितने परसेंट रिकग्नाइज कर रहा है डेटा। इट्स 97% एक्यूरेटली रिकग्नाइज कर रहा है। इसको दोबारा भी हमने एक्यूरेसी निकाली तो ऑलमोस्ट 97 निकली। हमने एक्चुअली कंपेयर करना था कि हमारा मॉडल और CNN मॉडल जो है आपस में कंपेयर होके क्या रिजल्ट देता है। हम एक्चुअली ये कर रहे थे, हम एक्चुअली कंपैरिजन मेथड लिख रहे थे कि हमारा मॉडल क्या रिजल्ट देता है और कन्वोल्यूशनल का रिजल्ट क्या देता है। दैट्स व्हाई इट क्रिएट एन एरर। तो आई विल सी कि इस एरर को कैसे करेक्ट किया जाए, और फिर हम इसको देखते हैं कि इसमें फर्दर काम कैसे करना है और कैसे लेके चलना है। सो टिल देन, व्हाट्सएप जिंदाबाद। और मैंने आपके लिए बुक भी निकाल ली है, एंड आई एम गोइंग टू सेंड द बुक। इसमें आप मशीन लर्निंग के पाइथन को आप इजीली स्टेप बाय स्टेप जो है उसमें कर सकती हैं। तो सी